Hello students, welcome. Today we will discuss the electric dipole and the other terms and expression related to it. So electric dipole is a system, or you can say the arrangement system of two equal and opposite charges placed at a finite distance is called electric dipole. So इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ये एक सिस्टम है, ये अरेंजमेंट है, यू कैन से टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का. लाइक लेट दिस बी द प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज द माइनस क्यू. Equal mean their magnitude is equal. Opposite mean one is positive charge and other is a negative charge, right? So and the distance between them, finite distance, right? So this finite distance is called as the dipole length and we take it as the 2a. Let the origin of the dipole, the center of the dipole is O. So on this word the distance will be a and in this way it will be a. So a plus a, it is the 2a. It is called the dipole length. So if you being asked what is dipole length, so you should write its definition. Dipole length is the length between the two equal and opposite charges, or the length of dipoles, right? Dipole length is a vector quantity and is represented like 2a. Vector quantity represented by 2a and its direction. Its direction is from negative charge to positive charge. It should be kept in mind. We have discussed the direction of electric field is from positive charge to negative charge, but the direction of dipole length is from negative charge to positive charge. Its unit, if you discuss the unit, so unit is simply length, so unit will be in meter. Next term is the electric dipole moment. Electric dipole moment, vector quantity represented by vector p, it is equal to the product of either charge and dipole length. So electric dipole moment is the product of the either charge. Either charge means dipoles are either charge. You can take plus q or minus q, but in magnitude we will take it as only q. Both are equal charges. So how will we represent it in mathematically? P equal to q into 2a. So in this way you can represent the electric dipole moment. In somewhere or in many books, this length of dipole is taken as 2L. So there is no need to worry. You can take 2L or 2A. Now its unit. So unit of dipole moment, charge has a unit coulomb, right? You know, we have discussed it. Charge has a unit coulomb and distance has a unit meter, right? So coulomb meter is the unit of electric dipole moment. In many time it is asked, name a quantity whose units are coulomb meter. So your answer should be electric dipole moment, or it can be asked you to drive the unit of electric dipole moment. Our next topic is, that is the very important topic, electric field intensity on
axial line of electric dipole. Electric field on axial line of electric dipole. Or somewhere the expression may be somewhat like this: find the electric field intensity on any point on axial line of electric dipole. Okay, so first of all, let us discuss its geometrical diagram. So let this be the our charge plus q here, and here it will let it is the minus. So system of two equal and opposite charges constitute a dipole. So this is our dipole. Length of dipole, you know, 2a. So if O is the center, so this will be distance L, A, and from this point it will be also a plus a 2a, right? So एक्सियल लाइन पे हमें एक पॉइंट लेना है, राइट? सो आप कहीं किसी भी एंड पे ले सकते हैं. यू कैन टेक ऑन द राइट एंड और लेफ्ट एंड, राइट? सो आप यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लो जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, राइट? और ये जो पॉइंट P है, सपोज करो ये जो इसका सेंटर है डाइपोल का, इससे r डिस्टेंस पे, राइट? आप इसको ज्वाइन कर दो. So now we have to find electric field at point P here, and this point P on the axial line, right? So now at point P there will be two types of fields, you know, electric field due to the positive charge as well as electric field due to the negative charge. So first of all, electric field due to positive charge at P, and let me represent it by E plus. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे फाइंड आउट कर. सो यू नो कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था. सो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज़ रेडियली आउटवर्ड. सो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इन दिस वे, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E प्लस, राइट? नाउ E प्लस, what is the formula of electric field? 1/4 pi epsilon 0 source charge, that is plus q. So q upon, but we take here r square, but it is not in all the time r square. We take the distance as distance between the source and observation point, right? So if this point is A, let this point is B, so distance will be AP square, and its direction along A to X, or you can say along PX. So what is now AP? AP, you know, this whole distance from A to P. So A to O distance is A, and from O to P it is R. So AP will be A plus R or R plus A. So electric field due to the positive charge 1/4 pi epsilon 0 q upon r plus a whole square. Distance is same along px, right? Let this be equation number 1. Now similarly we have to find the electric field due to the negative charge at point P. Understand it carefully. So electric field at P due to negative charge. So let it be represented by E negative. So now see here, so you see in the diagram E negative. Negative charge is here, right?
सो हमने पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज की होती है, यू नो इट इज रेडियली इनवर्ट, राइट, इन दिस वे. सो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, इट विल बी इन दिस वे, ई नेगेटिव, राइट. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ई पॉजिटिव थी आपकी वो राइट हैंड की तरफ है, और जो ई नेगेटिव है वो लेफ्ट हैंड की तरफ है. दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, राइट. सो ई नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q in magnitude q, otherwise its sign is minus, but we will take in a magnitude here. Now what is the distance? It is not here r square, but it is b to p. This is the source charge and this is the observation, so bp square. So what is now bp? We don't know bp, but we know this whole distance is r and this distance is a. So simply subtract r minus a, right. So क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r माइनस a होल स्क्वायर. और इसके जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं, सो ये अपोजिट है. सो इसको आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे अलोंग pb डायरेक्शन. So both the fields are opposite to each other. So you can write here both electric fields are opposite to each other. So therefore net electric field will be equal to, it is simply like adding two vectors which are in opposite direction, right. So कैसे करते हैं वहाँ पे हम, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ये है a और यहाँ पे कोई वेक्टर है b, right, smaller one, right. So you can see here E positive, यानी electric field to the positive charge 1/4 pi epsilon 0 q upon r plus a whole square, and E negative 1/4 pi epsilon 0 q upon r minus a whole square, right. So which one is larger, right. So आपको पता होगा यहाँ पे जो बाकी तो हमारे पास कॉमन है q/4 pi epsilon 0, यहाँ पे भी q/4 pi epsilon 0, राइट. बट यहाँ पर है r प्लस ए होल स्क्वायर और यहाँ पे है r माइनस ए. सो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल है, राइट. सो E नेगेटिव विल बी लार्जर. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड we will get by E negative minus E positive. So now you put the values here. जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे, सो यू कैन सी q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपके पास कॉमन आ रहा है तो इसको आप कॉमन ले लो, और आपके पास जो बचेगा 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर. So now take the LCM. So q/4 pi epsilon 0, LCM is r plus a whole square r minus a whole square. Now this is the simple mathematics. Now you can use the formula a plus b whole square minus a minus b whole square, that is equal to 4ab, right. And another formula, that is what, a minus b a plus b equal to a square minus b square. So by using these two formulas you can find the net electric field. So E equal to, now just see what we have here, r plus a whole square minus r minus a whole square,
you just apply the formula a plus b whole square minus a minus b whole square equal to 4ab, right? So क्या आ जाएगा आपके पास e equal to q upon 4 pi epsilon 0 4ra अपॉन, यहाँ पे आप यूज करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको सिंपल जो है वो कैलकुलेशन और इसको फार्मूले इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो भी आपके पास यही आएगा। सो नेक्स्ट इज E इक्वल टू, अब ये जो 4 है 4 को आप ब्रेक कर दो, सो ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा, सो Q इंटू 2A, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, और 2R ऐसे, 2 2 ज़ा 4, राइट, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। Q इंटू 2A दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, ठीक है। सो चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ क्या होता है, यू नो इट इज P, दैट इज अ डाइपोल मोमेंट। सो क्या आ गया आपके पास, E इक्वल टू 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ this is the electric field on the axial line of a electric dipole. In case of short dipole, if dipole is short, so what will happen, you know, dipole length will be small. If dipole length is small, A will be very small, right? So if A is very less than R, A is very less than R, or you can say R is very greater than A, right? So in that case, R square minus A square is approximately equal to R square. In that case आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R पावर 4। हाउ, आर स्क्वायर ए स्क्वायर जो है इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, ये पावर 2 थी, इसकी और पावर 2 है, सो आर पावर 4। अब यहाँ पे आपके पास आर और यहाँ पे आर पावर 4, सो दिस विल कैंसल्ड आउट, और आपके पास जो बचेगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। सो यू कैन सी हियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द electric dipole on its axial line is inversely proportional to cube of distance from the center of dipole. So in this way you have found the expression here. In the next video we will discuss electric field on the equatorial line of electric dipole. So dear students, अगर आप समझ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे ही आपको नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।